friends, welcome once again। दोस्तों, ये क्लास MCQs के बारे में है और MCQs के बारे में ये 9वां क्लास है हमारा। चलो शुरू करते हैं। In which of the novels did Aldous Huxley attempt to musicalize fiction? Option A, Brave New World. Option B, Point Counterpoint. Option C, Eyeless in Gaza. ऑप्शन डी, द बर्निंग व्हील। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, पॉइंट काउंटर पॉइंट। नेक्स्ट, हुक्सली ब्रेव न्यू वर्ल्ड इज अबाउट। ऑप्शन ए, द करेजियस इमर्जिंग वर्ल्ड। Option B, the satire on the influence of science in future. Option C, the life in future free from disease and devoid of emotion and spiritual life too. और option D, both A and B। तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी, both A and B। Next, Shakespeare wrote his plays uninterrupted between the years 1591 and 1613, except in 1603 and 1612. Why did not he write in play in 1603? तो ऑप्शन है ए है he was sick during that period. Option B, the theatre were closed in that year. Option C, both A and B. Option D, none of these। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, द थिएटर वर क्लोज्ड इन दैट year। Next, which of the following deals with the war of the rose? यहाँ आर लिखा हुआ है, ये और नहीं है, ऑफ है, वार ऑफ द रोज। ऑप्शन ए, सैम्यूल डेनियल, द सेवल वार्स। ये सैम्यूल डेनियल ने लिखा है सेवल वार्स, द सेवल वार्स। ऑप्शन बी, मिखाइल ड्राइटन, द बैरन वार। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दीज। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, द प्रेज winning suspension of disbelief is associated with। ये प्रेज किसके साथ मुंसलिक है? ऑप्शन ए, कॉलरिज। ऑप्शन बी, कीट्स। ऑप्शन सी, बॉयरन। और ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, कॉलरिज। नेक्स्ट, what could be the tragic flaw in Macbeth? Option A, olting of action. Option B, lack of action. Option C, both A and B. Option D, none of these। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, olting of action। Who wrote this? Asking a working writer what he thinks about critics
is like asking a lamp post what it thinks about dogs. ये किसने लिखा है ये सेंटेंस? ऑप्शन ए इजरा पोन, ऑप्शन बी जॉर्ज ऑरवेल, ऑप्शन सी जॉन ऑसबोर्न, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है जॉन ऑसबोर्न, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द वर्ल्ड फेमस शेरलॉक होम्स स्टोरीज? ऑप्शन ए जेम्स चेज, ऑप्शन बी शेरलॉक होम्स, ऑप्शन सी बोथ एंड बी, ऑप्शन डी कोनन डोयल। तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी कोनन डोयल। नेक्स्ट, which of Shakespeare's play is performed at 9 p.m. on June 23 every year? Option A, All is Well That Ends Well, option B, Tempest, option C, 12, ऑप्शन सी ये यहाँ साफ तौर पर दिखाई नहीं देता। ये क्या हुआ है, 12 लिखा हुआ है शायद, और ऑप्शन डी है और 12 नाइट। तो सही आंसर भी है हमारे साथ 12 नाइट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सर फिलिप सिडनी डाइज एट 32 एन, he did not die in a battle. Option A, he did not die in a battle. Option B, the battle of Zopen. Option C, the wars of roses, and option D, none of these. तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, द बैटल ऑफ जोफन। और ये ब्रिटिश और स्पेनिश के दरमियान ये जंग लड़ी गई थी। नेक्स्ट, about which of this novels did George Orwell say this moral to be drawn dash dash is simple, one don't let it happen, it depends on you? Option A, Animal Farm, option B, Bermuda Days, option C, The Road of Vegan Fire, and option D, 1984। तो इसमें सही आंसर है हमारे साथ ऑप्शन डी, 1984। Who is the author of God Made the Country and Man Made the Town? Option A, James Thompson, option B, George Graeber, and option C, Gray, option D, William Cooper। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, विलियम कोपर। नेक्स्ट, all I want is to answer to my blood direct without privileging intervention of mind or moral or what not. Who has written this sentence? Option A, Thomas Hardy, option B, Sigmund Freud, option C, D.H. Lawrence, and option D, James Joyce। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, D.H. Lawrence। Next, poetry is not a turning loose of emotion but an escape from emotion. This has been
said by option A Matthew Arnold, option B T.S. Eliot, option C A.C. Bradley and option D Carlyle। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी टी.एस. एलियट। नेक्स्ट, what the imagination sees as beauty must be truth. Who said this? Option A Coleridge, option B Haslin, option C uh, John Keats, ऑप्शन डी रस्किन। तो ये रस्किन ने कहा था, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट, विच प्रोमिनेंट मॉडर्न इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैज रिटन द critical work The Writings of E.M. Posters? Option A Virginia Woolf, option B Rose Macaulay, ऑप्शन सी एलिजाबेथ बोनी एंड ऑप्शन सी नेसी मेटफोर्ड। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी रोज मकाउले। नेक्स्ट, एडम स्मिथ famous work The Wealth of Nations was published in option A 1710, option B 1776, option C 1737, option D 1810। तो इसमें सही आंसर है 1776। The period 1607 to 1765 is known as the dash period of American literature. Option A early, option B dark, option C colonial, option D British। तो ऑप्शन सी कॉलोनियल लिटरेचर ये सही आंसर है। नेक्स्ट, in which novel of his Lawrence dealt with the psychological phenomenon known as Oedipus complex? Option A Lady Chatterley Lover, option B Sons and Lovers, option C The Trespasser and option D The Boy in the Bush। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी Sons and Lovers। The critical essay Shakespeare English Kings has been written by option A T.S. Eliot, option B S.T. Coleridge and option C William Hazlitt, option D Walter Pater। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी वाटर पेटर। नेक्स्ट, which historical event forms the background of Hardy the Dynasts? Option A what World War First, option B Spanish Civil War, option C Napoleonic Wars, option D American War of Independence। तो इसमें सही आंसर है नेपोलियनिक वार्स। नेक्स्ट, Hardy novels are chiefly set against the background of option A Essex, option B Portrees, option C Wessex and option D Sussex। इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी Wessex। Next, who of the under mentioned ones is not a metaphysical poet? Option A Donne, option B Dryden, option C Cowley, option D Vaughan। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी Dryden। And the last one is The Glass Menagerie is a play by Eugene O'Neill, option B Tennessee Williams, option D Arthur Miller and option D none of these। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी टेनेसी विलियम्स। तो दोस्तों इस लेक्चर का दूसरा पार्ट इस आने वाली वीडियो में मुलाहिज़ा कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।